Hello friends, welcome to Vyasa IAS CSAT course lecture number 7. So now we have uh, done a lot of questions on remainder theorem and we got the hang of the remainder theorem, how to do questions of the remainder theorem. Plus we saw one more concept, that is how to count the numbers which are multiple of some numbers. All right, how to count the number which are multiple of some numbers. Now let us move forward to how to find the remainder. Now let us move forward to some more questions. All right, some more questions. So let's start with simplest questions and we will do some questions that are on tougher end today. Okay, so this is a simple question. I hope everybody must be able to do it. So look at this question. You have find the remainder of 73 into 79 into 81 divided by 11. Now, what is the remainder here? See, I have already told you. So we can use negative remainder, okay, when the distance is more. So like if you use 11 into 6 is equal to 66 and 11 into 7 is equals to 77, then if you use negative remainder, आप 73 में से 77 में से 73 माइनस करेंगे तो आपका जो नेगेटिव रिमाइंडर वो 4 रहेगा. ओके ओके, नेगेटिव रिमाइंडर आपका -4 रहेगा तो आप यहाँ पे -4 लिख दीजिए. When you will find remainder for 79, then you will divide this by 77 तो आपका remainder क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. So write just 2 here. And similarly for 81, so 77 to 81 you have plus 4 numbers. Okay, so your remainder will be 4 only. So this divided by 11. Now this is what, -32. Okay, this is 4 into 4 is 16 and 2 is -32. So this is this. Alright, now you have 11 2 times it will go. Alright, 11 2 times it will go, then you will get the remainder as 10 minus 10. So when you are getting minus 10 as, remember what will be your remainder? 11 minus 10, because remainders cannot be negative. So we got a plus 1 as remainder. So the remainder for this number is plus 1. So this is the easiest of the question that we will do today. Now let's move forward. Now look at this question. We have done a lot of question where we have to divide by a number which was prime. Okay, so we were using this formula a lot. A to the power p minus 1 divided by p, so that it becomes equal to 1, and we were making this p minus 1. Okay, and then because p was a prime number, but here you see we have 8 as the number. Okay, we have 8 as a number. So how to do these kind of questions where we get non-prime numbers? Okay, so let us do for this as well. So you have 560 divided by 8. Okay, you have 560 divided by 8. Now somehow I have to make this number in the form of ax plus 1 divided by a to the power n, ax plus 1 to the power n divided by a. So somehow I have to make this number in this form. Okay, so what I plan to do here is I take this number 3 to the power 560. All right, and I can do what, just divide this number by 4. Why? Because see, 8 का table देखिए, 8 into 10 is 80. Okay, 3 to the power 1 is obviously 3, we don't get anything. 3 square is 9. Okay, so we can do this as well. Okay, we can do this as well. 3 square is 9, we can do this as well. So you will now have ax plus 1 to the power n divided by a. Now what is a here? A is 8 here. Okay, x is 1 here, this is plus 1 here, this is obviously 8 here, and you have to the power 9, you will get what, 1. Okay, so basically you are going to write 3 square. Okay, 3 square, and this is 560, this is 3 square, this is 280. All right, 280 divided by 8. So now you will have what, 8 plus 1 to the power 280 divided by 8 is equals to 1. So now you got the remainder 1. All right, now you got the remainder 1.
So this is how you can do it. This is very simple. Even if you are not getting, try to make it in the form of ax plus 1. Whatever will be the left, उसका remainder निकाल लीजिएगा तो आपका remainder आ जाएगा, है ना? So now this is also on the easier side. Let us do this question. Let us do this question. Now what this question says is आपके पास है 2 raised to the power 5 all right, and plus 5555 raised to the power 2222, and this number is divided by 7. So basically how you are going to do this thing, okay, how you are going to do this thing. So one thing is definite, I can definitely use a to the power p minus 1 concept, okay, a to the power p minus 1 divided by p concept. So let us find the first find the remainder for this, okay. So you have 2 divide this by 7. So what are you going to get? 7 2s are 14, 7 3s are 21, all right. So this will be 12, 7 1s are 7, okay, and this will become what, 5, okay, 52. So what is going to be the remainder here is 7 7 7 the 49, you can do it, okay. So you get 3 as remainder, okay, you get 3 as remainder. Be very confident, double check it whether this is the remainder, because see, 7 7 the 49, 4, you have 11, you have this what, uh, 3, sorry, 3, 7 threes are 21, 22, and when you add 3 to it, this becomes 2222. All right, this becomes 2222. So you have 3 to the power 5, 5, 5 plus uh, you have 5555 divided by 7, okay. So you have 5555 divided by 7. So you have what, 7, it can go how many times in 55, okay. So 7 times 49, okay, 7 times 49, you have this becomes 63, 7 9s are 63, okay. So this becomes what, 25, and then you have 7 3s are 21. So you are getting 4 as remainder for 5555, okay. You are getting 4 as remainder for 5555, and this is to the power 2222. All right, this is to the power 2222. Now this is divided by 7, okay. Now what I have to do is I have to make this in the form of, now what I have to do is I have to make this in the form of 3 to a to the power p minus 1 divided by p, all right, a to the power p minus 1 divided by p. Now for multiple also it works. So basically we have to find the factor for 6, all right, we have to find the factor for 6. So let us just divide 2 by 6, okay. So what are you going to get here? You are going to get 6 threes are 18. All right, 6 threes are 18. Then you will have 4 as a remainder. Then you have this 42. All right. Now you will have 6 sevens are 42. Then you have this 2 and 370. Okay. So you have 370 into 6. 6 zeros are 642. And this will become what? 18 plus 4 is 22. And then you have plus 2. All right. So basically you will have what, 4 to the power 6n plus 2. This is in this format, all right. So we will calculate the remainder for this. First let's just also calculate about uh, what factor of 6 is 5555, okay, or whatever remainder we are getting, okay. So what I am going to do here is I am dividing this 5555 by 6, okay. I am dividing this 5555 by 6, all right. So what is going to happen here is basically you have 6 is 8 6
6 9 are 54 you will have, all right, and then you have 15. Now you have 6 2s are 12, and this is 35. This is 35, and basically what you have, what is left here is you can't do 6 6 are 36, so you will do 35. So 5 you are getting as remainder. Let us check whether this is good or not. Okay. So you have 6 5s are 30. You have 2 6 are 12. 5 here. Okay. Then you have uh, 1 carried over, and 9 6 are 54, so you are getting obviously 5555. Okay, so this power is what? 3 to the power 6n plus 5. Okay, we just have to bring this number, okay, this number, so that we can calculate the remainder. Okay, so that we can calculate the remainder. Now let us see how to proceed forward. Okay, now you have this number. See, 3 to the power 6n into 3 to the power 5 plus 4 to the power 6n into 4 square divided by 7 we have. All right. Now this we have this in the form of a to the power p minus 1 divided by p. So obviously we are getting 1 here. Now you have 3 to the power 5 and 4 square divided by 7. Okay, 3 to the power 5 and 4 square divided by 7. Now what is basically 3 to the power 5? You can obviously calculate this remainder, because 3 to the power 5 is what? You will get 243. So divide 243 by 7. Or what is 4 square is obviously 16. So there is 16. So just add these two numbers. You have 9, 5, 259 you have. Just divide this by 7. What is the remainder? That will be the remainder. So basically this is what 7 threes are 21. All right. And you have 49 left. Okay. So 7 sevens are 49. So basically your remainder is what? 0 here. This thing, this expression is completely divisible by 7. Okay. So because this is a little bit lengthy, this question is on a little bit lengthier side. So let us see what we did from the beginning. We took the number 222. We took this number. We first calculated the remainder for these digits. Okay. We first calculated the remainder for these digits. Then we made this number in the form of p minus 1's factor. That is, here 7 is a prime number, so we have to make p minus 1 is 6, and 6 का जो factor है हमने उस फॉर्म में इसको लिखा. जो रिमाइंडर बचा उसको इसके एडिशन में लिखा, बिकॉज 555 का क्या क्या मतलब है, 5550 जो कि 6 से डिविजिबल है, और प्लस 5, तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया. ऐसे ही हमने 2222 का कर लिया. 222 का क्या मतलब है कि 2220 इस ये 6 से डिविजिबल है, एंड आप क्या करेंगे, प्लस 2 और बचता है तो उसको लिख लीजिए, तो आपका ये दोनों चीज क्लब हो जाता है. ठीक है, जब आपका ये हो जाए, सो ये इसका आप रिमाइंडर 1 कंसिडर कर दीजिए. लॉ ऑफ इंडाइसिस लगा दीजिए. ए टू द पावर m प्लस n क्या होता है, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n. बस हमने वही किया यहाँ पे, एंड दिस बिकेम 1. ये वाला पार्ट 1 हो गया. जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो गया. तो हमारा बचता क्या है, 3 टू द पावर 5 प्लस 4 टू द पावर 6n इंटू 4 स्क्वायर. तो हमारे पास बचा ये और ये नंबर. जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर आया 0, है ना. दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल. जब कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो आपका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है. सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट. चलिए, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. We will solve a lot of question this way. So this is again on the simpler side. ये आपको दिया है 2851 2862 का होल स्क्वायर and 2873 का होल क्यूब. Now you have to divide this by 23 and you have to find the remainder. Okay, you have to find the remainder. तो क्या करिए, किसी एक भी नंबर से इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लीजिए. ओके, तो ये इतना मुश्किल नहीं है. 23 1 टाइम्स जाएगा
तो आपका 5 आ जाएगा। ओके, फिर 23 को अगर हम 2 टाइम्स करेंगे सो वी विल हैव 46। ऑलराइट, वी विल हैव 46। ओके, वी विल हैव 46। अब क्या बचेगा, ये 9 बचेगा। ऑलराइट, ये 9 बचेगा। उसके बाद 23 से आप कर लीजिए 4 टाइम्स। ओके, 4 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 92। 23 से 3 टाइम्स कर लीजिए 69 हो जाएगा। 3 टाइम्स कर लीजिए 69 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम ऑब्वियसली 22। 22। ओके, तो अभी जब आप 23 से 2851 को डिवाइड करते हैं तो आपको 22 रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, 22 रिमाइंडर मिलता है। अगर अगर इसमें 1 और ऐड हो जाता तो ये जो होता, ये नंबर जो होता, अगर ये 2852 हो जाता, जो कि हमने देखा कि 92 आया था 23 इंटू 4, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है ना, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। So instead of writing 22 as a remainder, I will write minus 1 as a remainder. Okay, I will write minus 1 as a remainder here. Okay. नाउ अभी देखिए ये 2862 है, ये 2862 है। तो 2862 जो है वो बेसिकली हमें पता है अब कि 2852 जो है वो किससे डिविजिबल है, 23 से डिविजिबल है। ठीक है ना, तो हमारा ये 2862 जो है इसको हम, इसका जो रिमाइंडर है वो 10 लिख सकते हैं। सो यू विल गेट 10 स्क्वायर एज द रिमाइंडर। ऑलराइट, because 2852 is completely divisible by 23, then your 2862 will give the remainder what when divided by 23. It will give the remainder 10 obviously. Okay, because 2852 plus 10 it becomes 2862. So this becomes 10 square. Now similarly you have 2873. Okay, 2873. 2873. Now see, 2852 is divisible by 23. You add one more 23 in it, again it will be divisible by 23. So 2875 is also divisible by 23. Okay, 2875 is also divisible by 23. Now this is 2873. Obviously do minus 2. Okay, obviously do minus 2 here. So you have minus 2 का cube divided by 23. Alright, you have minus 2 का cube divided by 23. तो अभी ये जो ये बचता है ये क्या है, माइनस 1 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 23। ओके, डिवाइडेड बाई 23। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली ये आपका हो जाएगा, इसको आप क्यूब करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ओके, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100। तो बेसिकली आपका बचता है 800/23। अब इसका सिंपल रिमाइंडर निकाल लीजिए तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है ना, इसका सिंपल रिमाइंडर निकाल लीजिए। देखिए इसमें कैलकुलेशन तो हुआ है, बट see, if you will multiply this and this number, you will do square of this number, you will do cube of this number, and you will multiply all these number. So then it will become more difficult. Okay, it will become almost in. So at least we did it within some limited amount of time. Okay, so this is how we do these kind of question. Now यहाँ पे remainder निकाल लेते हैं. So you have what, 23 into 3, you will have 69. All right, you will have 69. तो आपका 11 बचता है। यहाँ पे 0 रख लीजिए, यहाँ पे 0 रख लीजिए। तो आपका ये जो है 23 इंटू 4 करेंगे 92 होता है। 92 से 110 का जरा डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए कितना है। दिस बिकम्स 8, दिस बिकम्स 0, दिस बिकम्स 1. So you get 18 as your remainder. All right, you get 18 as your remainder. All right, आपको 18 रिमाइंडर मिल जाएगा। सो ऑब्वियसली देखिए रिमाइंडर का आंसर गलत आया या सही आया है, इसको चेक करने का एक तरीका है। अगर 23 से बड़ा आ जाए कभी रिमाइंडर तो समझ लीजिए कि रिमाइंडर गलत है, बिकॉज ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट योर रिमाइंडर विल लाई बिटवीन 0 to 23. फॉर एनी नंबर n, the remainder will always lie between 0 to n.
Okay, so pay attention at this concept as well, ताकि गलत ना हो. So this is it. Now let's move forward. Let's move forward a bit more. Now you see you have this number. If the sum of two and guys, look at this, what this question is saying. It is saying if the sum of 2n plus 1 prime numbers where n belongs to n is an even number, then one of the prime numbers must be. So this question is basically saying you are having 2n plus 1 prime number, your n belongs to n, okay, and the sum is an even number, and the sum is an even number, then one of the prime number must be. Okay, now see, uh, 2n plus 1 prime number means you are 2n plus 1 means what? You are adding up odd number of terms. Okay, you are adding what? Odd number of terms. अगर आपसे कोई बोले कि आप 2n plus 1 नंबर ऐड करिए, तो आप बेसिकली ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर रहे हैं, आप 3 ऐड कर रहे हैं, आप 5 ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना. लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि आप 2n नंबर्स ऐड कर दीजिए, तो आप इवन नंबर ऑफ नंबर्स ऐड कर रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो आप इनको ऐड कर रहे हैं. लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि आप 2n plus 1 नंबर ऐड करें, तो आप 1 2 3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, या 1 2 3 4 5 ऐड कर रहे हैं, ठीक है. सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर विथ व्हाट आई एम सेइंग हियर. नाउ दिस इज सेइंग कि 2n plus 1 प्राइम नंबर को जब ऐड करते हैं, जब 2n plus 1 प्राइम नंबर को ऐड करते हैं, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि देन वन ऑफ द प्राइम, तो आपको एक इवन नंबर मिल रहा है, ठीक है ना. अब देखिए, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वेन एवर यू ऐड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, देन यू विल गेट एन ऑड रिजल्ट. Okay, whenever you add odd number by odd number of times, है ना, you will get odd result. तो यहाँ पे प्राइम नंबर की बात हो रही है, तो हम 3 5 7 ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना. तो ये तीनों ऑड नंबर है, आप दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे, इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, तो आपको इवन नंबर मिलेगा. लेकिन आप इसमें इसको ऐड कर लीजिए 7 को, तो आपको 15 मिल जाएगा. आप फिर एक ले आइए, ठीक है ना, तो ये फिर क्या हो गए, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो गए प्राइम नंबर्स, तो आपको फिर 26 मिल जाएगा. लेकिन आप फिर ले आइए ये, है ना, इसको क्या कर दीजिए, ऑड कर दीजिए, तो आपका फिर 39 हो जाएगा. आपको समझ में आया बात, ठीक है ना. सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दैट व्हेन यू ऐड ऑड नंबर ऑफ टर्म्स यू गेट odd result. Okay, always remember this. Now it is saying you are getting a odd number by you are getting even number by adding odd number of terms, ठीक है ना. you are adding even, you are getting even number by adding odd number of terms. तो ये तो पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ है कि कोई ना कोई नंबर इवन रह गया है, कोई ना कोई नंबर इवन रह गया है. तो अगर कोई ना कोई नंबर इवन रह गया तो वो डेफिनेटली 2 होगा प्राइम नंबर्स में. क्यों? क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आपने ऐड किया, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आपने प्राइम नंबर्स ऐड किए, तो दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे इवन आ जाएगा, दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे इवन आ जाएगा, और ये इवन और इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा इवन आ जाएगा. लेकिन अगर ये भी ऑड नंबर होता तो दो ऑड नंबर को ऐड करते, आपको क्या आता, इवन, ठीक है. फिर ये भी दो ऑड नंबर है, आपको इवन आएगा, इवन प्लस इवन इवन आएगा, बस ये ऑड हो जाएगा तो आपको ऑड आ जाएगा, ठीक है ना. तो बेसिकली आपका ये 2 रहा होगा, कोई इवन नंबर रहा होगा, दैट्स व्हाई यू गॉट इवन नंबर. सो दिस इज हाउ इट कम्स टू बी 2. ऑलराइट, दिस इज हाउ इट कम्स टू बी 2. आई होप you understand the basic nitty-gritties of the question. Now see, what will be the difference between largest and smallest 4-digit number made by using distinct single-digit prime numbers. Okay, so what are prime number? 2 3 5 7. Between 1 to 10, single-digit prime numbers are 2 3 5 7. All right. So how we will do is, we have 7 5 3 2, and then you have 2 3 5 7. What is the difference between these numbers? Because largest prime digit number will be this one. Okay, largest prime digit number, largest number with 4 prime digit will be this one. You keep the largest number in the beginning and then you keep this. Okay, so this is the largest number,
and then you have 2357. Okay, so this is the smallest number. So just subtract this, you will get 5 here. Okay, so this and this can be the possible answer. And then what are you going to get here? This will become 2. So this will become 7. Now I will not calculate further. I will just mark the answer because I saw the answer. Okay. So you can do this as well. Never do the full calculation when you can take advantage of half calculation as well. Okay. So never do that. अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये 4 आ जाएगा तो 1 ये तो कंफर्म ही हो गया बट स्टिल ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now guys, look at this question. The difference between two three-digit number XYZ and ZYX will be equal to. अब देखिए दो थ्री डिजिट नंबर है XYZ एंड ZYX. X और Z के डिफरेंस के मॉड्यूलस के बराबर सम के X और Z के या फिर 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन X एंड Z और 99 इंटू डिफरेंस बिटवीन X एंड Z. तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमारी एक प्रॉपर्टी भी बन जाएगा. ठीक है ना, ये हमारी एक प्रॉपर्टी भी बन जाएगा. तो चलिए कोई भी सिंपल नंबर ले लेते हैं और इसको देख लेते हैं. तो एक्स वाई जेड और जेड वाई एक्स करेंगे. ठीक है, तो इसको आप 123 ले लीजिए तो ये 321 हो जाएगा बिकॉज एक्स इज 1. सो एक्स इज 1, वाई इज 2, सो वाई इज 2, जेड इज 3, सो जेड इज 3. So this is how it is. Then you have 321 minus 123. Okay, then you have 321 minus 123. So you have 8 here, you have 9 here, you have 198 here. Okay, अभी क्या करना है, 99 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका आ जाएगा 198. ओके, देखिए डेफिनेटली ये 9 के डिफरेंस के बराबर तो नहीं लग रहा. 9 इंटू एक्स, एक्स एंड जेड, तो x माइनस जेड करेंगे आपका क्या आया 2. ओके, तो 9 इंटू टू तो 18 हो जाता है तो डेफिनेटली उसके बराबर नहीं है. लेकिन x माइनस जेड करेंगे तो आपका 2 आया तो उसको 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर बनेगा इसके इतने के बराबर तो आ गया उसका डिफरेंस. ठीक है ना. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी दैट इफ यू हैव दिस थ्री डिजिट काइंड ऑफ नंबर देन द डिफरेंस बिटवीन टू थ्री डिजिट नंबर जब उसको रिवर्स ऑर्डर में कर दिया जाता है सो इट इज इक्वल टू 99 इंटू डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड जेड. ओके, सो थ्री डिजिट नंबर है, इसमें ज्यादा ट्रिक का करेंगे क्या. ओके, we can always calculate it but in trick question yes definitely it works. Okay, now see, look at this question. I gave you this in the practice sheet as well and this was on little or the trickier end, so I thought that I should tell its solution. Okay, so let's begin with its solution. So you have 100 to the power 17 minus 1 by 9. Okay, plus 10 to the power 34 plus x. So this whole thing is divided by 9 and you are going to get the remainder 0. So what is the value of x it is asking. Okay, what is the value of x it is asking. तो basically ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, इसको जरा अगर अपन खोल लें. 100 to the power 17, 100 to the power 17 plus 10 to the power 34, 10 to the power 34 divided by 9. Okay, divided by 9 and you have what, x minus 1 is equals to 0. ठीक है, तो इनका रिमाइंडर जो भी आएगा प्लस दिस टर्म दैट शुड बी इक्वल टू 0. तो दो रिमाइंडर इज 0 तो अपने को x की वैल्यू निकालनी है. ठीक है ना. अभी देखिए 100 को 17, 100 टू द पावर 17, क्या 9 प्राइम नंबर है? ऑब्वियसली नहीं है. तो क्या हम इसको ax प्लस 1 टू द पावर n के फॉर्मेट में बना सकते हैं? ठीक है, ax प्लस 1 टू द n के फॉर्मेट में बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं. आपका 9 क्या है, 9 इंटू 11 इज 99. ओके, तो 99 प्लस 1 टू द पावर 17 डिवाइडेड बाई 9 आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है, आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है, आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा. तो ये 1 लिख लीजिए इसका रिमाइंडर प्लस नाउ यू हैव 10 टू द पावर 34. आपके पास क्या है 10 टू द पावर 34.
अभी क्या इसको ax प्लस वन के फॉर्म में लिख सकते हैं बाई ए टू द पावर एन? डेफिनेटली दिस इज 9 प्लस वन 10 ओनली। ओके, सो अगेन आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड नाउ यू हैव x माइनस वन, ओके, बाई 9। तो ये बेसिकली सब रिमाइंडर ही तो है। तो ये 1 1 कैंसिल, x प्लस वन इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, okay, your remainder is what, x plus 1 uh, is equals to 0. Okay, is equals to 0 because यही आपका remainder आया, 2 x minus 1. Okay, यही आपका remainder आया। तो what will be the value of x? Okay, what will be the value of x? So आपकी x की वैल्यू जो है वो -1 आ जाती है। ओके, एक्स की वैल्यू आपकी -1 आ जाती है, आप ये करके देख लीजिए। बट वी नो -1 कैनॉट बी द कैनॉट बी द वैल्यू। ओके, -1 कैनॉट बी द वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 9 -1 कर देंगे, हमारा 8 आ जाएगा। ओके, 9 -1 कर देंगे, हमारा 8 आ जाएगा। तो बेसिकली ये रिमाइंडर ही तो है, ठीक है ना। आप इसको इस तरीके से देखिए, आपको सॉल्व नहीं करना है इक्वल टू जीरो, ये रिमाइंडर है, ठीक है ना, ये रिमाइंडर ही है। तो वही हमको सॉल्व करना है, तो हमारा x इक्वल टू 8 आ जाएगा। ओके, x इक्वल टू 8 आ जाएगा। सो आई होप guys, look at this question. It is saying the least number which can be added to 8441 so that it is completely divisible by 57 is. Okay, least number which can be added to 8441 so that is completely divisible by 57. So how we can do this question? You have 8441. You have to divide this by 57. Now see why this question, both of the question I have listed in the same slide. दोनों को एक ही साइड में इसलिए रखा है क्योंकि ये दो क्वेश्चन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। आप क्या ऐड करेंगे किसी नंबर में कि वो डिविजिबल हो जाए, और क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे किसी नंबर से कि वो डिविजिबल हो जाए। ओके, तो लेट्स सी। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन सा नंबर इसके आसपास का है जो डिविजिबल है कम्प्लीटली 57 से। सो 8441 देखते हैं। सो 57 डिवाइडेड बाई 8441 क्या आ जाएगा, 57 वन टाइम्स, ऑल राइट। यू हैव दिस 7, this 7 and this 27, you have 274, then you multiply 57 by 4 क्योंकि वही 20 के आसपास आएगा। ओके, सो क्या मिल जाएगा, 7 4 आर 28, 2 and this 5 4 आर is 22, 20, इसमें और 57 ऐड करेंगे तो this will become 285, so that will be of no use for you. So just subtract 228 from here. You have 6 here, you have 6 here, so you have 4 here. So uh, this becomes 461. All right, this becomes 461. Okay, now what we can put here. So I will check a number which is near to this, makes it 40, so I'll check here. So 8 5 is a 56, 5 here carry over, 8 5 is a 40, and you have 456 here, you have 456 here. Now the remainder is 6. Okay, no, sorry, the remainder is 5. Now the remainder is 5. So देखिए 8441 में अगर आप 5 माइनस करेंगे तो क्या नंबर आ जाएगा, 8436। ओके, 8436। ओके, तो ये जो नंबर था 8436, ये डिविजिबल है किससे, 57 से, है ना। आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये फिर 456 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। So this number is divisible by 56. All right. Now see, uh, we this number is divisible. Now you add 57 to this number. Okay. Now you add 57 to this number. So this will become divisible. Okay. This will become divisible by what? 57. Okay, 8493 will become divisible by 57. Okay, 8493 will become divisible by 57. तो बेसिकली इसमें है क्या कि आपने यहाँ तो आपने 5 सब्सट्रैक्ट करना है ना। द लीस्ट नंबर विच कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 8441 सो दैट इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 57, यहाँ तो आपने 5 सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। बट ये वाला जो नंबर है, ठीक है, 8441, तो आपका 5 रिमाइंडर आया, ठीक है। 5 रिमाइंडर आया तो मतलब ये नेक्स्ट डिविजिबल नंबर के तरफ 5 चल पड़ा था,
बट रह कितना गया 57 माइनस 5 दैट इज 52. आर यू अंडरस्टैंड दिस? ये थोड़ा इंट्यूटिव है, इसको समझने की कोशिश करिए. ये 8441 था, इसका हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे. तो ये 5 नंबर क्या है 8436 से आगे चल पड़ा है, ठीक है ना. ये 57 के बाद जो नंबर आएगा वो डिविजिबल होगा. ये 5 नंबर चल पड़ा है तो इसको बचा कितना चलने को 52. तो 52 इसका आंसर हो जाएगा. तो ये लाने के लिए बेसिकली हमको क्या करना पड़ता है, हमारा जो रिमाइंडर आया उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. किससे? ये 57 से, आपके डिविजर से. So you will get 52. So I hope everybody is clear that when you have to add number, find out the remainder, subtract it from the divisor, and you will get the number. I also explained you the concept why this happens. So I hope everybody is clear with this concept. Okay, कि whenever you have to subtract any number, so just subtract by the remainder. Okay, when you have to subtract any number, just subtract by the remainder. But when you have to add some number, find the remainder, subtract the remainder from divisor, and you will add the number here, and you will get your uh, the number which is completely divisible. Okay, फिर से सुन लीजिए. Find the number, find the remainder, subtract this divisor from remainder. Okay, subtract this remainder from divisor. Whatever the number comes, that number have to be added to this number so that this becomes divisible. Okay, so I hope ये जो concept है everybody is clear with this. You will get a lot of question of this format in UPSC. Basically this question, because it is a little bit on the easier side, so what UPSC will do is it will put some one or two more concepts into it. Okay, when it will put some one or two more concepts into it, then it will become a UPSC level question. So we are not seeing today UPSC level question. Why? Because we need other concepts as well. Okay, we need other concepts as well to solve those questions. So basically ki jo, look at this question guys. You have 3 to the power 2n is minus 1 is divisible by 2n plus 3 for n equal to. Okay, so there is one approach in which you put n equal to 1 and 3 minus 1 divided by 2 plus 3. Okay, so what are you getting here? You are getting 2 by 5 not divisible. Okay, this is the approach in which you put the options. Okay, because see, if these options will satisfy this, then it is okay, otherwise none of these, so none of these. Okay, so uh, put n equal to 2, put n equal to 2. So you have 3 into 2 minus 1. So 3 to the power 4 minus 1 you have. So you have 243 minus 1. Okay, you have 243 minus 1. So basically you have 242. Alright, you have 242. Now, sorry, this became, I think this is, sorry for the calculation mistake. Here 3 to the power 4 minus 1. So this is basically what 81 minus 1. This is 81 minus 1. So this becomes 80. Alright, this becomes 80. Now 80 divided by 2n plus 3. 80 divided by 2n plus 3. So what this will become? 80 into 2 into this. So 80 by 7 you are getting. Is this divisible? Not divisible. So you can try for 3 as well. So you have 3 to the power 6 minus 1 and you have 6 plus 3, that is 9. Okay. So basically what you will be getting 3 to the power 6 is what 81 into 9, that is 729. 729 minus 1. So this is what 728. 728. So 9 8s are 72, 0. Again, so you get the answer at this question. It is saying what, for what maximum value of n will the expression be an integer. So you are given 10 to factorial this and 504 to the power n. Okay, and 504 to the power n. Now you have to find for what value of n this will be an integer. Okay, this will be an integer. So we already know what power of this number can be in this number. We just have to do what? Just divide 1020
by 504. If it is completely divisible, then write the greatest integer that you are getting by dividing this number. Okay, if it goes by higher power of this, then still do this. Okay, then still do this. Now see, when I will divide this, okay, when I will divide this 1020 by this, what I am going to get? 504. Okay, 504. Let's divide this by 1020. Okay, so you have 25 and 2, and you have 5, 1, and obviously double zeros. Then you have 12, 1, 2, ठीक है, and 126, and then you have 2, 10, 5, 0. Okay, 2550. Then you have what? 126. Now from here onward, you can obviously try to do it by um, see students, it is asking for what maximum value of n will the expression 10,200 factorial be divided by 504 to the power n. Okay, 504 to the power n. So how we will do this? So see, we know that to get the power of this number in factorial, we need to just see the greatest integer. Okay, we need to just see the greatest integer in division, plus, and we raise to the power also if it is possible. But see, if I square this, if I square 504, then basically it will be a 6-digit number. It will be a 6-digit number, but this is a 5-digit number, so I don't need this, because then greatest integer will become 0. So what I need, this is the greatest integer in this number only. So let me do this. This is 50. Okay, so what are you going to get? You multiply this by 2, you are going to get 1008. Okay, 1008. So multiply this, get 1008. Now what you are getting, you got 2 here, and you got 1 here. Okay, and you got 0 here. Okay, so and you got 0 here. So now you are getting this 8001. Okay, now see, more than this you are not going to get any other number. Okay, so 1008. Now you don't need to divide, you got your integer. Okay, you got your integer. What is your integer? 201. Okay, you got your integer, because you want to find the greatest integer. Okay, find the greatest integer. So you got your 201. All right, you got your 201. So n should be equal to 201. Then this number will be completely divisible and integer. Okay, for a number to be an integer, when you are trying to divide it, it should be a divisible. All right, it should be divisible. ये 504 से 10200 को डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये नंबर इंटीजर आएगा. ठीक है ना? तो हमने ये निकाल लिया. We got n equal to 201. I hope everybody is clear with this thing. Now let's move forward. Now see, we did this question, the difference between two three-digit number x, y and z and x will be equal to. तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि x, y and z, y and x के बीच का जो डिफरेंस है वो 99 इंटू क्या हो जाएगा? z माइनस एक्स. ठीक है ना, या x माइनस जेड, जो भी बड़ा है. ठीक है, 99 इंटू एक्स माइनस जेड इसको ले लेते हैं. ठीक है ना, तो देखते हैं कि क्या हुआ. है ना, देखते हैं आगे जाके कि क्या होता है. इसमें देखिए, द क्वेश्चन इज आस्किंग what is the difference between the numbers 842 and its reverse is divided by 99, the remainder will be. तो देखिए 842 है. ठीक है ना, तो एक्स वाई जेड इसी को ले लीजिए. इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 6. है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 6. तो अगर आप 842 और इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, किसको डिवाइड करेंगे? 248 को. ठीक है ना,
तो आपका जो वो आएगा वो 6 into 99 आएगा, है ना। 6 into 99 आएगा, यही आपका नंबर आएगा। आप चेक कर लीजिए, सब्सट्रैक्ट दिस नंबर ऑन इन योर कॉपी एंड चेक व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस नंबर, यू विल गेट द सेम नंबर 6 into 99। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 842 एंड इट्स रिवर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 99, तो रिमाइंडर विल बी, तो 6 into 99 को 99 से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा रिमाइंडर, बिकॉज कुछ भी नहीं बचेगा। It will be, question will be an integer, remainder will be 0. Obviously 0 is the answer. Okay, obviously 0 is the answer. Now let's move forward. Now see, this is a similar kind of question. आपको क्या करना है, when the difference between the number 783 and its reverse is divided by 99, the quotient will be, तो 783 आपको नंबर दे देते हैं, इसका रिवर्स हो जाएगा 387। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, 4 into 99, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 4 into 99, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा 4। सो दिस इज दैट इजी, दिस इज दैट इजी इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। Now see, look at this question. It is saying what the minimum value of x, so that x square divided by 1024 is an integer. Okay, x square divided by 1024 is an integer. So see, यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू बेसिकली देखिए, 4 तो वैसे भी नहीं होगा, 32 इज व्हाट, 2 to the power 10। ओके, 2 to the power 10, तो वैसे अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट, ओके, यू विल गेट द आंसर 6 एंड दिस बिकम्स 9, सो दिस बिकम 1024। तो ये बिकॉज 2 के पावर में था, तो दिस वॉज वेरी इजी, ऑल राइट, दिस वॉज वेरी इजी, ठीक है। फिर अदरवाइज आप रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा नंबर आया जो नहीं हो रहा है डिवाइड, ऑल राइट। नाउ सी, this is saying find the sum of all the two-digit natural numbers which leave the remainder 3 when divided by 7. Okay, all the two-digit natural number which leave the remainder 3 when divided by 7, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर 3 आ रहा है ना, रिमाइंडर 3 आ रहा है, मतलब ये किस फॉर्म के हैं, 7n+4, ओके, 7n+4, है ना, नहीं 7n+3। Look at this question. Look at this question, guys. Find the sum of all two-digit natural number which leave the remainder 3 when divided by 7. Okay, when divided by 7, it is leaving the remainder 3. So the number will be basically of 7n+3 format. Okay, 7n+3 format. Now you have to find all the two-digit natural numbers. So basically, you have to put n. Okay, you have to put n. ओके, नाउ सी, यहाँ पे हम ए पी लगा सकते हैं, ए पी लगा सकते हैं, मतलब क्या, कि आपका फर्स्ट डिजिट जो होगा, आपका जो फर्स्ट डिजिट होगा, n=1 रखिए तो ये 10 आ जाएगा। ओके, n=1 रखिए तो ये 10 आ जाएगा। उसके बाद आपका जो लास्ट डिजिट होगा वो ऐसा होगा कि ये जो है 100 ना हो पाए, है ना, ये जो है 100 ना पाए, तो आप इसमें क्या रखेंगे, ठीक है, आप इसमें क्या रखेंगे। सो ये रख लीजिए, 7 3 21, ओके, 21 टू दिस बिकम्स व्हाट, 91+3। अब आप इससे ऊपर करेंगे तो यू विल नॉट गेट अ टू डिजिट नंबर। ओके, सो यू हैव 3 8 are 24, 104 हो जाता है, तो 13 तक रखते हैं। तो आपके पहले में n=10 रखेंगे और दूसरे में n=13 रखेंगे, ठीक है। तो 13 और 10 के बीच कितने नंबर हैं, बोथ द नंबर्स इंक्लूडेड, बोथ द नंबर्स इंक्लूडेड, ठीक है ना। कितने नंबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 13 - 10 विच इज, सॉरी, n=1 है, ठीक है ना, n=1 से 13 के बीच में टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, 13 - 1, एंड व्हेन वी हैव टू इंक्लूड बोथ द टर्म्स, सो हैव 12 + 1 दैट इज 13। तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स 13 है, आपका फर्स्ट जो नंबर है वो 10 है, ठीक है, आपका जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 94 है, ठीक है। और आपका जो कॉमन डिफरेंस है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस हियर,
सी अभी नेक्स्ट नंबर कितने के बाद आएगा, है ना, नेक्स्ट नंबर कितने के बाद आएगा, 7 × 2 + 3, ये क्या हो जाएगा, 14 + 3 17, ओके 17। तो पहले 10 था, फिर 17 आया, तीसरा कर लीजिए क्या हो जाएगा, you have 21 + 3, which is what, 21 + 3 is 24, 24, ठीक है, तो कितना हो गया, 7 कॉमन डिफरेंस हो गया, तो आपका कॉमन डिफरेंस हो गया 7, ठीक है, कॉमन डिफरेंस हो गया 7। और देखिए आपको कॉमन डिफरेंस की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको लास्ट टर्म पता है, आपको एंड पता है, ठीक है ना, तो देन योर दैट विल कम योर। See guys, look at this question. Find the sum of all the two-digit natural number which leave a remainder of 3 when divided by 7. Okay, which leave a remainder of 3 when divided by 7. So, see, you have to find two-digit natural number and it has to leave a remainder of 3 when divided by 7. So you have the number in the form of 7n + 3, 7n + 3 के फॉर्म में नंबर है, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपका क्या आएगा, 7 + 3 10, ओके 7 + 3 10। एंड सेकेंडली देखिए लास्ट नंबर क्या आएगा, आपको टू ही डिजिट नंबर चाहिए, तो आप 7 × 13 करिए, ठीक है, वो क्या आ जाएगा 91, और 91 में 3 ऐड करेंगे तो आपका 94 आ जाएगा। अब आप देखिए आपके पास फर्स्ट डिजिट 10 है, लास्ट लास्ट डिजिट जो है आपके पास 94 है, और आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 13, 1 से लेके 13 तक आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 13 है, ठीक है ना, आप इसको देख लीजिए, 13 - 1, ओके, एंड बिकॉज बोथ द टर्म्स हैव टू बी इंक्लूडेड देन दिस बिकम्स 13, ओके। तो एपी का फॉर्मूला होता है जब आपको फर्स्ट या और लास्ट टर्म पता हो, दैट बिकम्स n/2 a+l, n/2 a+l, ठीक है, n क्या है यहाँ पे 13, टू क्या है, टू ही है, ए क्या है 10 है, बिकॉज फर्स्ट नंबर इज 10 ऑब्वियसली, लास्ट नंबर इज 94, सो यार 13 into 104/2, so this is 52, so 52 into 13 is what, 156 and 52, so 6 7 6, so the sum you are getting is 676, all right, the sum you are getting is 676। ठीक है, now how many numbers between 1 and 200 are exactly divisible by 3 9 and 27? How many numbers between 1 and 200 are exactly divisible by 3 9 and 27? So how to do this kind of question, uh, are divisible by exactly 2 of 3 9 and 27. Question, it says how many number between 1 and 200 are exactly divisible by 3 9 and 27, all right. So how to do this kind of questions? Now it is saying the number should be exactly divisible by 3 9 and 27, all right, the number should be exactly divisible by 3 9 and 27 and exactly 2 of 3 9 and 27। तो देखिए ये बेसिकली क्या कह रहा है कि कोई नंबर है तो वो 3 9 और 27 में से सिर्फ दो ही नंबर से डिविजिबल है। ऐसे कौन से नंबर है जो 3 9 और 27 में से सिर्फ दो ही नंबर से डिविजिबल है, देखिए अभी देखिए जो भी नंबर 27 से डिविजिबल होगा वो 9 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो आपको ऐसे नंबर चाहिए जो नंबर 3 और 9 से डिविजिबल हो, ठीक है ना, बेसिकली आपको ऐसे नंबर चाहिए जो सिर्फ 3 और 9 से डिविजिबल हो, चलिए दिस इज ओके। बट देन यू हैव दी नंबर 3 एंड 9, तो अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा, ओके। तो बेसिकली हम क्या कर लेते हैं, 1 से 200 के बीच में वो नंबर्स फाइंड कर लेते हैं जो कि 9 से डिविजिबल हो, जो कि 9 से डिविजिबल हो। तो देखिए 9 से डिविजिबल नंबर चालू कहाँ से होगा, 9 से, ओके ऑब्वियसली 9 से। एंड 200 के पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो अभी आप देखिए दिस इज 200, दिस इज नॉट डिविजिबल, इज 199 डिविजिबल, नो, 198 यस, 9 2s are 18, ओके, एंड 9 2s are 18, सो आपके पास क्या आया 198,
ओके 198। अब देखिए 19 और 198 के बीच में कितने नंबर है? Divide this by 9, so you will sorry 198 minus 9, all right, 198 minus 9 आप करेंगे तो आपको वो नंबर्स मिल जाएंगे जो 9 और 198 के बीच में है, बट वो क्या है आपके किससे डिविजिबल है? सी आप 198 माइनस 9 करेंगे तो आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे बिटवीन 198 एंड 9, एंड बिकॉज हमको इंक्लूड करना है 198 के साथ ये, ठीक है, 198 और 9 हमको दोनों इंक्लूड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 9 एंड 198 इज दिस, ओके, बिटवीन 9 एंड 198 इज दिस। तो 198 माइनस 9 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 190, ओके, ये क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 190 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम 9 से डिवाइड कर लेते, क्यों? बिकॉज आप देखिए 9 प्लस 9 18 हो जाएगा, प्लस 9 27 हो जाएगा, तो आपको 9 से डिविजिबिलिटी चाहिए, तो आप 9 से डिवाइड करते रहिए। तो ये क्या हो जाएगा 9 9 2 टाइम्स 18 एंड 9 1 टाइम्स इज 9, ओके। सो लेट अस टेक 22 नंबर्स, क्योंकि 21 आ रहा है प्लस हमको बोथ द नंबर्स इंक्लूड करने हैं, तो हमारे पास 22 नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है, 22 नंबर्स हो गए, ठीक है। तो अब हमको लेकिन इसमें से वो नंबर्स एलिमिनेट करने हैं जो 27 से डिविजिबल है, ठीक है, वो नंबर्स एलिमिनेट करने हैं जो 27 से डिविजिबल है। सो देखिए कौन से नंबर्स आएंगे, आप 9 से 18 प्लस कर दीजिए तो आपका 27 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 27 के पास 27 ही होगा, ठीक है ना। तो हम बेसिकली करेंगे क्या, हम 27 से 198 के बीच में नंबर देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये क्या आ रहा है, ये तो आपका 108 के आ रहा है, ओके। तो इसमें इसमें आप बेसिकली दो काम कर सकते हैं, आप 27 से नंबर ले लीजिए बेसिकली, जो नंबर 200 के पहले 27 से डिविजिबल हो, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं 8 देख लेते हैं, 7 8 जा 56, 5 18 करेंगे 236 आ जाएगा, सॉरी 16 करेंगे तो 216 आ जाएगा, तो नहीं हमको चाहिए। 27 इंटू 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 are 49, you have 14 and you have 189. So between 27 and 189, how many numbers are divisible? Okay, how many numbers are divisible? So 189 minus 27, 2, okay, and this will be what, 6, so you will get 62, all right, you will get what, 62, and this will be 162, okay. You have 162 numbers between 27 and 189, okay, 162 number between 27 and 189 divided by 27, all right, divided by 27. So you have basically what, 7 5s are 35, this will be 135, okay. Let's add 27 more to it, will that work for us? Okay, yes, this works for us, okay. So basically how many numbers you are getting, between this, you 5 numbers you are getting between 27, between 27 and 189, that are divisible by 27, okay, 5 numbers you are getting, okay. Earlier you had 22 numbers that were divisible by 9, now just subtract 5 numbers that are also divisible by 27, your answer will come, okay, your answer will come. So I hope everybody is clear with this thing. I know this class was a little short, okay. So in the next class we'll keep a little longer class, we'll do more questions, we will see more concepts, and then our number system will be done. After that I will be giving you a lot of practice sheets, and simultaneously I will be posting more solutions to those sheets. So thank you so much for this class, and we'll meet in the next class.